billionaire and you want to become extremely wealthy. क्या आपको लगता है कि आप अकेले काम करके बहुत अमीर बन सकते हैं? नामुमकिन है। आपके साथ एक टीम का होना जरूरी है। आपके पास एक प्रोजेक्ट हो, आपके पास एक मिशन हो, और फिर वो लोग हों जिनकी आप में आस्था हो। Your team has to have faith in you. Faith in what? You should be able to inspire them, you should be able to encourage them or engage with them, and they should believe that जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि इसमें आपका अपना फायदा है और आप चाहते हैं कि ये हो, उसमें उनका भी फायदा है। The team members also draw some benefit from acting with you. So that's how effective leadership is formed, and it requires to cultivate and maintain an environment that enables more than just developing your skills. So you also need to develop the skills of those around you who are a part of your team, and only then you will thrive. So it's not just about surviving, it's about thriving. So these are the skills of a leader. The leader has to formulate a vision, align people, motivate and inspire people, and then influence their actions towards achieving the goal. An effective leader acts decisively. देखिए, आप भी अपने क्लासेस के लीडर हैं, आप सब टीचर्स हैं। मुझे बहुत खुशी है मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सब टीचर्स हैं, आप भी अपने अपने क्लासेस के लीडर्स हैं। कभी कभी जरूरत ये होती है कि आप बिल्कुल साफ जवाब दें, हाँ या ना। ये सच है कि कभी हम अक्सर जो है ये वाला जो एटीट्यूड है कि विन विन सिचुएशन हो और हाँ ठीक है, ओके, मे बी, और देखते हैं, इनसे बात बन जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक लीडर वो हस्ती होता है जिसके अंदर एक्ट करने की ताकत होती है और जो कि हाँ या ना में अपने एक्शंस का मैनिफेस्टेशन कर सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अभी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में देखा कि मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हूँ और मैंने वाइल्ड लाइफ में एमएससी किया। तो हमारा डिपार्टमेंट जो है यहाँ अलीगढ़ में बहुत ही छोटा हुआ करता था। 5 स्टूडेंट्स का क्लास था एमएससी वाइल्ड लाइफ का, और हम चूंकि मास्टर्स में थे तो हमें सबको एक एक जैसे अलमारी सी होती है छोटी सी, उसको पिजन होल कहते थे, वो दिया जाता था कि हमें रोजाना किताबें लेके आने की जरूरत नहीं है और हम अपना उसी में रख लें। अच्छा, मैंने थोड़ा सा लेट एडमिशन, मतलब एडमिशन लेने के बाद मैं पर्सनल रीजन से चली गई थी अपने घर। जब मैं लौट के आई तो एक ही पिजन होल खाली था और वो लॉक था। तो मैं उसकी चाबी मांग रही हूँ ऑफिस में, मैं बार बार सबसे कह रही हूँ कि सबको पिजन होल मिल गया है, मुझको नहीं मिला है। मुझे हर दफा ऑफिस से ये जवाब मिलता था कि पिछले बैच के जो हमारे एक सीनियर हैं वो अपना सामान इसमें रख के चले गए हैं और उन्होंने इसको लॉक कर दिया है, और हमने उनको, तब तो ईमेल इतना फोन वोन नहीं था, मैं आपको 96-97 की बात बता रही हूँ। तो वो अभी आएंगे, जब वो इसको खोलेंगे तब आपको मिलेगा। तो मैं बड़ी परेशान, तकरीबन 1 महीना परेशान। फिर मैं अपने चेयरपर्सन के पास गई। अब देखिए ये फर्क है लीडर का। मैंने कहा कि सर मुझे तो पिजन होल ही नहीं मिला है। बोले क्यों? मैंने कहा वो जरीफ जो है उनका उसमें ताला लगा हुआ है और वो मुझे तो चाबी दे ही नहीं रहे। वो उठे अपनी चेयर पर से, मेरे साथ आए और सबके सामने, वो पिजन होल कोई स्टोर रूम में नहीं था, हमारे यहाँ किसी कॉरिडोर में ही लगा हुआ था, और सबके सामने उन्होंने ताला तोड़ा अपने हाथ से। चपरासी से कहा इसका सारा सामान निकाल के एक डिब्बे में पैक कर दो, सील पैक कर दो, और मुझसे कहा कि तुम इसमें अपना ताला लगा लो। ये होता है एक्टिंग डिसाइसिवली। और ये एक लीडर ही कर सकता है, ये एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर
अपने स्टूडेंट से एम्पैथी होती है। पॉसिबल नहीं है कि जिसके अंदर स्टूडेंट से एम्पैथी ना हो वो इस तरह के डिसीजन ले सके। अपने ऊपर हाँ या ना का जो कॉन्सिक्वेंस है उसको अपने ऊपर बेयर करते हुए डिसीजन ले लेना। अब देखिए, उसका जब आप एक्टिंग डिसाइसिवली करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है नेविगेटिंग थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी विद ग्रेटर एफिशिएंसी। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑफिस वाले मना कर रहे हैं, स्टूडेंट परेशान है, लेकिन चेयरपर्सन को डिसीजन लेना है। जब आप ऐसा करेंगे तो चैलेंजेस होंगे। कोई भी राह इतनी आसान नहीं होती है कि आपको राह में कोई मुश्किलात मिले ही ना मिले, कोई ना कुछ चुनौतियां आपको मिलेंगी। तो जब आप शुरू करें एक्टिंग डिसाइसिवली तो चैलेंजेस को एंटिसिपेट कर लें पहले से कि चैलेंजेस आएंगे और आप इसके लिए प्रिपेयर रहें कि आप उनको इजीली, इन चैलेंजेस को आप फेस करेंगे। अब ये जो मैंने आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाया उसमें ऐसा हो सकता था कि वो लड़का आता जब तो वो बड़ा नाराज होता या वो झूठ झूठ कह देता कि इसमें तो मेरा ये कीमती सामान था, वो कीमती सामान था, वो तो खो गया और आपने क्यों ताला तोड़ा। हो सकता है कि वो जाके वाइस चांसलर से शिकायत करता, हो सकता है वो अखबार में छपवा देता, हो सकता है वो बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती थी। लेकिन इन सब को एंटिसिपेट करते हुए लीडर ने एक डिसाइसिव एक्शन लिया। यही फर्क होता है लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर में। लीडर कैन navigate through complexity with greater efficiency. Administrator can only implement the law or implement the rule. And we need something beyond administration. We need academic leadership. It is more complex than leadership in the corporate sector. One needs to be flexible. One needs to have an eye on high quality. It needs to be path breaking. You should know right from the beginning what is the input and what are the intended outcomes, because university is an ever-changing space. I should say, I firmly believe that university is the harbinger of change, actually. So here we have academic leadership where the stakeholders are students, teachers, funding agencies, administrative staff, and also the society. But there are no such frontiers like the consumer and the producer and other things. Now, this course, my dear participants, you are pursuing on national education policy orientation and sensitization. The national education policy recognizes that suboptimal governance and leadership of higher education institutions is one of the major problems currently faced by the higher education system in our country. So people like you, teachers like you need to focus, you need to develop, you need to hone your academic leadership skills. So at a glance, for an academic leader, it is important to have academic capacity, it is important to have leadership capacity, it is important to have a good mastery over all types of leadership styles, and to have personal and interpersonal capacities. Personal and interpersonal capacities like good communication skills, like good conflict resolution and self-regulation. अब एक छोटी सी बात है, आप देखें, आप सब टीचर हैं, अगर आप अपनी क्लास में टाइम से जाते हैं आपका स्टूडेंट भी टाइम से आएगा। ये हो गया सेल्फ रेगुलेशन। अगर आप एचओडी हैं, अगर आप अपने ऑफिस में टाइम से आ जाती हैं तो आपके बाकी सारे जो जूनियर कलीग्स हैं या सीनियर कलीग्स हैं वो भी टाइम से आएंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। डिसाइसिवनेस मैंने पहले बात की इसके बारे में।
जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो हम इन डिटेल इसमें देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में. एक्चुअली द मेन क्रक्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज दैट लीडरशिप स्टाइल्स. लीडरशिप कैपेसिटी में लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज आती हैं, मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, टीम मैनेजमेंट, culture related skills, time management, prioritization, so many things. आप सबके पास मुझे पूरा यकीन है कि एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है, तभी आप देश के किसी न किसी विश्वविद्यालय में या देश के किसी महाविद्यालय में एक शिक्षक की हैसियत से मौजूद हैं और शिक्षा जिसे कहते हैं ना, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो वो सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं. तो लेकिन ये जो आपका रिसर्च है, ये जो आप की पढ़ाई लिखाई है, आपकी इंस्टीट्यूशन में जो आपकी रेप्यूटेशन है, रिसोर्सेज को आप किस तरह लाते हैं, फंडिंग वगैरह कैसे आप खर्च करते हैं, इस सब के अलावा आपके अंदर ये कॉम्पिटेंसीज, ये लीडरशिप स्टाइल्स पे मास्टरी, उनकी नॉलेज और साथ ही साथ पर्सनल एंड इंटरपर्सनल कैपेसिटीज होना बहुत जरूरी है. तो जो मेन एकेडमिक लीडरशिप ट्रेट्स हैं उनमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन, फिर आता है एम्पैथी, फिर ग्रिट, फिर फोकस और फिर फाइनली इमोशनल इंटेलिजेंस. मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन क्यों बहुत ज़रूरी है. आप सब जानते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैरा वर्बल कम्युनिकेशन और इसके साथ ही वर्बल कम्युनिकेशन, इस सब को मिला करके अगर आपके अंदर एक सुदृढ़ शक्ति है कम्युनिकेट करने की, अपनी बात को मजबूती से कहने की, अपनी बात को सफाई से कहने की और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की जो आप चाहते हैं, तो फिर आपको अच्छा लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता. एम्पैथी यानी कि दूसरे के नजरिए से परेशानियों को या मुद्दों को देखना, उनको समझना और फिर उस लिहाज से अपने फैसले करना. ये एक टीचर की हैसियत से भी और एक लीडर की हैसियत से भी हमारी बहुत बड़ी खूबी होती है कि हम जब टेबल के इस साइड बैठे, we're on this side of the table and somebody appears on the other side of the table, then we step into his shoes, we step into her shoes and we try to empathize with him or her, try to empathize with the issue that is being faced by somebody who has approached us, who has approached our office for any resolution to any issue. Then comes grit and focus. देखिए, ये सिर्फ लीडरशिप में ही नहीं, बल्कि अगर आप में से कोई लोग एजुकेशन से हैं या नहीं भी हैं, तो जाहिर है हम सब पठन पाठन के कार्य में संलग्न हैं और हमने अपना पूरा जीवन पठन पाठन के कार्य को दे दिया है. हमारा एक बड़ा अच्छा रिश्ता होता है हमारे छात्रों से. आप देखें कि अगर आपके 10 साल से 20 साल से आप पढ़ा रहे हैं, आपके कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं? यकीनी तौर पे मैं आपको बताऊं कि वो तलबा और तालिबात जो कि बचपन से अपने अंदर एक खूबी रखते हैं और उस खूबी का नाम है ग्रिट, पेशेंस, परसिवेरेंस, वो हमेशा ज़्यादा कामयाब होते हैं. भले ही उन्हें अक्ल, IQ और उनका टैलेंट और उनकी मेहनत थोड़ी सी कम ही क्यों ना हो, लेकिन लगे रहना, लगन जिसे कहते हैं, और घबराना नहीं, गिव अप नहीं करना और अपना जो ध्येय बना लिया है, अपना जो लक्ष्य बना लिया है, उस मकसद के लिए हर वक्त कार्यरत रहना, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ अ पर्सन. And finally, there is emotional intelligence. So one by one, we will look at these leadership qualities. Communication begins with active listening. जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपका वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी भाषा कितनी अच्छी है, आपका जुबान पे उबूर कितना अच्छा है, आप कितने how fluently you can speak a particular language, how good your vocabulary is.
all that is important, but it is not 100% of the game. The game begins with active listening. आपसे कोई बात कर रहा हो, आपसे कोई अपनी बात कह रहा हो, तो उस वक्त आप प्लीज पे अटेंशन, आप ध्यान लगा के उनकी बात सुने. आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. आजकल लोग कोई दूसरा उनसे बात कर रहा होता है तो वो अपना फोन देख रहे होते हैं. यहाँ तक कि लोग एक ही फोन पे एक तरफ किसी से बात कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ अपना इंस्टाग्राम या अपना फेसबुक या व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं. डिवाइडेड अटेंशन एंड लो अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा है. देखिए, जब आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आप उसे एक्टिव लिसनिंग कैसे बना सकते हैं? जाहिर है आपने कानों में अपनी रुइयां तो नहीं डाल रखी हैं, उसकी बात तो आपके कानों तक पहुंच रही है, लेकिन अगर आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या उसके जो जेस्चरल मूवमेंट्स हैं, हाथों से और चेहरे से भी इंसान बहुत कुछ कहता है, उस पर आपकी नजर ही नहीं है, तो फिर उस बात का पूरा मतलब या वो जो बात कह रहा है वो बात मुकम्मल म्यूट कर लें सब लोग प्लीज. ओके, तो हम नहीं समझ पाएंगे. इसलिए द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर is to be an active listener. Second comes transparency, then comes clarity, and then when a communication is happening, then comes the ability to ask open-ended questions. जो आपसे कुछ कहने आया है वो आपके सवालों से उसे उलझन नहीं हो रही है, वो इरिटेट नहीं हो रहा है, उसे जरूर ये एतमाद होगा कि आप दिलचस्पी से उसकी बात को कम से कम सुन रहे हैं, कम से कम आप मन लगा के उसकी बात सुन रहे हैं. तो इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक टेल मी मोर, please explain what you mean, or you're asking questions like define that term or concept for me, then your communication becomes stronger, and then communication becomes successful. And then finally comes receiving and implementing feedback. देखिए, जिस तरह से मैं आज आपसे कुछ पार्टिसिपेंट्स मेरे सामने हैं और मैं इनसे हम कलाम हूँ, मुझे बहुत इश्तियाक रहेगा, मैं ज़रूर शिफाली मैडम से पूछूंगी कि पार्टिसिपेंट्स को मेरा लेक्चर कैसा लगा. यकीनी तौर पे मैं आपसे कहूँ कि कुछ कहेंगे अच्छा था, कुछ कहेंगे नहीं अच्छा था. मैं उनकी बात बहुत दिल से सुनना चाहूँगी जो कहेंगे कि नहीं अच्छा है, और मैं जानना चाहूँगी कि वो कौन सा ऐसा एरिया है मेरे कम्युनिकेशन में जो कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू मी, नो फीडबैक इज नेगेटिव फीडबैक एंड नो फीडबैक इज पॉजिटिव फीडबैक. एवरी फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. Constructive feedback. So you build upon your strengths, but you should be prepared to hear about your weaknesses and don't take it to your ego. जब आपसे आपकी वीकनेसेस की बात हो रही हो फीडबैक में, तो कभी भी आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए. इस बात को याद रखिए कि जो लोग आपका ईगो मसाज करते हैं वो फिर बाद में आपको बेवकूफ बनाते हैं. तो फीडबैक लेने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना है. बी प्रिपेयर्ड. सो नाउ वी विल लुक एट दीज लीडरशिप क्वालिटीज one by one. Empathy is the capability of understanding the other person's experience and emotions, and 40% इसको जाता है श्रेय कम्युनिकेशन के सक्सेस का. और empathy से you can build trust, you can more effectively coach, and the more you appreciate your students or your colleagues or your team members, the higher their morale will be and the stronger the work culture of your organization will be. So that was about empathy. Then comes grit. I said that again and again. Your ability not to give up, your ability to be patient, your ability to persevere,
your tenacity, your desire and willingness to put up a lot of effort to accomplish long-term objectives despite adversities. And this you will be able to do only if you have courage, only if you have conscientiousness, perseverance, resilience and passion. मैं क्यों कह रही हूँ conscientiousness? बताइए. यदि आपकी अंतरात्मा, आपका ज़मीर जिसे हम कहते हैं, वो बार बार आपसे ये कह रही है कि ये गलत है, ये गलत काम है, ये गलत चीज़ है, तो फिर आपके अंदर वो खुद एतमादी नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती है, जिससे कि आप अगेंस्ट ऑल एडवर्सिटीज यू डू नॉट गिव अप. आप उसे परसू करते रहेंगे अगर आपको यकीन है कि आपका जो प्रपोजल है या जो आपकी जो स्टेप है उसमें सच्चाई है, उसमें ईमानदारी है और किसी किस्म की कोई ज़मीर फरोशी नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि आपका ज़मीर आपको इसके लिए मलामत नहीं कर रहा है. तो फिर दूसरे अगर उसको रोक रहे हैं या दूसरे अगर आपको टोक रहे हैं और आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं और आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, राह में अड़चने डाल रहे हैं, तो आप उनसे घबरा के और खामोश नहीं बैठ जाएंगे, आप उसे गिव अप नहीं करेंगे, आप उसे करते रहेंगे. तो इसे कहते हैं परसिवेरेंस. रेजिलियंस इज अ लिटिल मोर देन परसिवेरेंस. कभी कभी हादसे ऐसे हो जाते हैं कि हम विद ग्रीफ, विद पेन, विद सॉरो वी सिट बैक, but our ability to get back, our ability to come back and fight back, that is called resilience. And resilient people find it much better when it comes to leadership success. Emotional intelligence, it involves self-awareness, self-management, social management and relationship management. मैंने इसमें बाद में बात की थी, आपने देखा था जब हम ओवरऑल एकेडमिक लीडरशिप की बात कर रहे थे, तो हमने उसमें रिलेशनशिप एंड कल्चर रिलेटेड सोशल मैनेजमेंट देखा था. आजकल बहुत एक ट्रेंड है, आपने नोटिस किया होगा, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी. सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, कल्चरल इवनिंग्स करा के, कल्चरल प्रोग्राम्स करा के, लेक्चर्स करा के, और जैसे कि आपने देखा है कि मुख्तलिफ जो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास उनके दूसरे देशों के बहुत से हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स होते हैं, क्या कोई ऐसी कल्चरल पीसेस होती हैं जो वहाँ की बहुत ख़ास होती हैं. तो इस तरह से हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं. अगर आप अपने ऑफिस के हेड हैं और आप साल में एक बार होली मिलन कर लेते हैं या ईद मिलन कर लेते हैं, या आपके ऑफिस के आसपास जो लोग रहते हैं आप सर्दियों में उनके पास जाके कंबल वगैरह बांट देते हैं थोड़ा बहुत, ये आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट है. और इससे बड़ा फर्क पड़ता है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, आपकी एकेडमिक लीडरशिप क्वालिटीज इनसे बहुत अच्छी मानी जाती हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत जोर है 1 और इसके साथ ही 19.2, 19.4, ये सब इस पे जोर दे रहे हैं कि मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स के बाद हमारे इंस्टीट्यूशंस में अगर एक कल्चर ऑफ एक्सीलेंस लाने की ज़रूरत है, तो वो तभी हो पाएगा जब हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो लीडरशिप है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होगी. तो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए जाएंगे और उसमें बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत ही कॉम्पिटेंट और डेडिकेटेड लोग होंगे जिन्होंने पहले अपने कमिटमेंट की और अपने कैपेबिलिटीज़ की के सबूत जो हैं वो दे रखे होंगे. तो ये आउटलुक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लीडरशिप, एकेडमिक लीडरशिप के लिए. और जो आगे की स्लाइड्स में मैं आपसे बात करूंगी, तो जो नया रेगुलेटरी रिजीम है जिसमें कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक ओवरआर्किंग हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, HECI,
और उसके 4 वर्टिकल्स होंगे। 4 अलग-अलग काम ऐसा माना जा रहा है कि हायर एजुकेशन, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के हैं, तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक बिखराव है उनके उसमें। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि एक्रेडिटेशन के लिए एक तरफ नैक है और दूसरी तरफ एनबीए भी है। तो फिर इन सबको डू अवे करके एआईसीटी, यूजीसी, नैक, एनबीए, इन सबको 4 वर्टिकल्स इस तरह के बनाए जा रहे हैं। हीरा, हीफा आपने सुना होगा, हम आगे की स्लाइड में उसके बारे में बात भी करेंगे। और एक्रेडिटेशन के लिए ऐसे ही एनएसी, नाक है। So the policy has ambitious plans for bringing a reform in the programs और लीप प्रोग्राम, मतलब ये इस तरह से था, जैसे आपको मालूम है कि एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करने के लिए ऑल ओवर द कंट्री जो 10 इयर्स के सीनियर प्रोफेसर्स हैं, जो कि टॉप 100 का हिस्सा हो या टॉप 200 में, कभी कभी आईआईएससी आ जाती है, और वो आईआईएससी तो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, कभी कभी आ जाती है, और बाकी जो है वो हमारा सारा जो 1000 यूनिवर्सिटीज एंड 50,000 कॉलेजेस, तो ये ज़्यादातर हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस आर एफिलिएटेड टू दीज यूनिवर्सिटीज़। तो ये टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारा रिसर्च है, हमारा आउटरीच है, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक सफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से अभी हमारे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नहीं बन पाई हैं। तो ये जो लीप प्रोग्राम था, इसमें ये किया गया था कि ऐसे टीचर्स को जिनके अच्छे पब्लिकेशंस भी हैं, जिनके अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है और जिनका अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, उनको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग किसी वर्ल्ड हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में करवाई गई और 2 हफ्ते की उनको इंडिया की किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करवाई गई। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त रहा कि मैंने अपने कैलम सेंटर, जिसकी मैंने आपसे अभी बात की, एनएमटीटीटी में हमारे कैलम सेंटर जो बना था, मिनिस्ट्री ने ही बनाया था, तो उससे हमने 2 ऐसे कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए थे, एक मोनाश यूनिवर्सिटी में और एक ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो अब हमें उम्मीद है कि इससे ऐसे वाइस चांसलर्स दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के बनेंगे जिनको कि आप कुछ ऐसा तजर्बा है किसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का, और वो वहाँ से जो कुछ भी सीख के आए उसको थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करना। अब देखिए, हम बात करेंगे एकेडमिक लीडरशिप स्टाइल्स की। 7 लीडरशिप स्टाइल्स हैं एकेडमिक लीडरशिप के: ट्रांसफॉर्मेशनल, कंस्ट्रक्टिविस्ट, इंस्ट्रक्शनल, ट्रांजैक्शनल, डेमोक्रेटिक, इमोशनल एंड अथॉरिटेटिव। एक एक करके हम इन स्टाइल्स को टेकअप करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात बहुत वाज़ेह कहना चाहती हूँ। हमारे पास इसका जवाब नहीं है कि कौन सा स्टाइल अच्छा है और कौन सा स्टाइल बुरा है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हर स्टाइल कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन स्पेसिफिक है। Every style is context and situation specific, and every style comes with its own weaknesses and with its own advantages, or let's say with its own strengths. ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टाइल बहुत अच्छा है और आपको उसे ही मास्टर कर लेना चाहिए और वो काफ़ी होगा, या ये कि इसमें से ये स्टाइल तो बहुत बुरा है और आपको इसको कभी भी नहीं अपनाना है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल, कंस्ट्रक्टिविस्ट, इंस्ट्रक्शनल, transactional, democratic, emotional, authoritative. All these 7 leadership styles, they go into making a good academic leader. We will take it up one by one. Instructional leadership focuses on instruction and development of students. The teachers are allowed to use to help students learn new things,
and allows teachers and students to develop a sense of ownership over what they do in class. So it encourages them to take responsibility for their actions and strive for excellence. So, an instructional leader wants to understand how the students learn, what teaching methods work best for each student, and how to use this information to create effective learning environment. So, you need to master this skill. Second comes transformational leadership. It focuses on the growth and development of others. So, and it is based on the belief that people are inherently good, so they should be encouraged to perform at their बेस्ट. आपने वो सुना होगा ना, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एक बहुत मशहूर नॉवल है, बाद में फिर उसकी एक मूवी भी बनी और छपी थी ये द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. उस पे बहुत सारे प्लेस भी हुए ब्रॉडवे में. वो बच्ची जो है एन फ्रैंक, जो ज्यू थी, डायरी लिखती थी और बाद में वो जब उन्हें जो गवर्नमेंट नाजीज ने जब उन्हें डिस्कवर किया तो जाहिर है फिर सबको वहीं भेज दिया, कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया और वो नहीं मिली, लेकिन उसकी डायरी मिल गई थी और उसकी डायरी को छपवाया गया था. तो उसने अपनी डायरी में लिखा था, इस सब के बावजूद इतनी तकलीफों से उसकी कि जो कुक है या कोई भी हेल्पर आती है, कोई डोमेस्टिक हेल्प आती है, आप उनसे कहती है कॉफी बना दीजिए, तो उन्होंने अपना चाय, वो कॉफी और वो आप दूध वूध सब शक्कर वक्कर घोल दिया और आपको दे दिया. आपको कॉफी नहीं पसंद आई, अब आप उनसे कहते रहे कि ये अच्छी नहीं थी, अच्छे बनाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अगली बार फिर वैसे कॉफी बना के देंगे आपको. On the contrary, if once, just once, if you go to the kitchen, good cup of coffee, how do you get it done? You get it done by transforming your kitchen cook or domestic help, your coffee maker, from bad coffee making skills to good coffee making skills. But you have been able to inspire. एक बार उनको अपने हाथ से बना के दिखा के, प्यार से उन्हें समझा के कि देखिए आप ऐसे करेंगी तो ये कितना अच्छा लग रहा है, तो उससे निकाला और वो एक अच्छा, she could think outside the box and she is now transformed into a good coffee maker. हो हैं और हमारी strong interpersonal skills हैं और सिर्फ इंस्ट्रक्शन ये देना होता है कि इसे करो. अब कोई आपसे सवाल नहीं करे, कोई आपको अपने शक व शुबहात का इजहार नहीं करे, ठीक है. आपने कह दिया करना है और इतनी देर में करना है तो उसे होना है, हाँ. But then you first need to be very sure of yourself. So in this kind of authoritative leadership, you have high expectations, you can delegate the tasks very effectively, but your team will not accept this kind of leadership all the time. आपकी टीम कह सकती है कि नहीं भाई, अब ये हर बार हमें भी अब कुछ अक्ल है ना, और आप तो बड़े अथॉरिटेटिव लीडर हैं और आप तो किसी की कुछ सुनते ही नहीं है ना, और इस तरह से हम नहीं काम कर पाएंगे. ऐसे हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि फिर आपकी टीम को खुद से कुछ करने की आदत ही ना रहे, वो फालतू बैठे रहे, वो बस इंतजार करें कि जब आपने कुछ कहा और आपने जो स्पून फीडिंग किया तो करना है वरना नहीं करना है. So this is a situation specific leadership style. You should know when to use it, and you are the best judge of deciding which style is effective at what point of time. Then there is the constructivist style, and then there is the democratic leadership style. Constructivist style is very effective in education, and in this you start with a problem and then let the team come up with solutions of the problem. And who knows, even you might learn something new, because everybody out there has something to tell you which you don't know till now. So this is a style in which more collaborations are possible. This is a style in which more sharing of ideas is possible. And this is a style where everybody has a very clear understanding of
what they are learning by interacting and exploring their perspectives. And this style is the best for your students because it helps them develop critical thinking skills, right? Critical thinking skills. And to be able to think critically, it goes a long way into making you a leader. Then comes the democratic leadership style. The name suggests that it's a very good style. But let me tell you one thing. There are situations when you don't have the time to be a democratic leader. दिस इज नॉट ये गणतंत्र ये हम क्योंकि हम यहाँ एकेडमिक लीडरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ डेमोक्रेसी. हम एक गणतंत्र की, एक रिपब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं. इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ये सच है कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बहुत पार्टिसिपेटिव होता है. पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में सबका इन्वॉल्वमेंट होता है और हर किसी को ये एहसास होता है कि वो इस टीम का हिस्सा हैं और हर किसी को ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ कंट्रोल है. इसकी वजह से उनकी लर्निंग, उनकी ग्रेड्स सभी कुछ इम्प्रूव होती हैं. और बहुत से टीचर्स जो हैं या बहुत से एकेडमिक लीडर्स इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. लेकिन कभी कभी आपके पास समय नहीं होता कि आप सबकी बात सुने, कि आप सबका ओपिनियन लें. और कभी कभी आपको डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, ठीक है. तो आपको खुद फैसला करना है. हाँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को कभी ना अपनाएं. आपको ज़्यादातर इस स्टाइल को अपनाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के सिलसिले में भी और अपने कलीग्स और अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके सिलसिले में भी. लेकिन इतना याद रखिए कि इट इज़ नॉट द ओनली स्टाइल. यू विल have a very pleasant, happy experience doing this, taking opinions from everybody, having the time to sit down and listen to everybody. कभी कभी आप इसे ज़रूर करें, या चलिए मैं कहूँगी ज़्यादातर आप इसे ज़रूर करें. लेकिन इस बात को याद रखिए कि हमेशा इसे करने का आपको समय नहीं है. कभी कभी अर्जेंसी होगी, कभी कभी क्राइसिस होगी, कभी कभी लास्ट मोमेंट हार्ड डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट को करना पड़ता है. और कभी कभी आपको सिर्फ इससे काम चलाना होगा कि आप कहें डू इट बिकॉज आई एम सेइंग एंड आई एम नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग. आई वांट दिस टू गेट डन. समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. Then comes emotional leadership. The leader can provide a lot of because it's very effective, especially as teachers. It involves mentoring, it involves emotional connect, empathy, compassion, care, well-being, and teachers have a very high self-awareness and self-regulation for this leadership style. So, but you need to have the right amount of emotional intelligence. Your own EQ should be high enough so that you can identify your own emotions and manage them appropriately. Because when you are providing emotional leadership, when you are connecting to your team members emotionally, then please remember that it will be emotionally challenging for you too, because all of us are not on the same emotional plane. Some people are indifferent, some people are, there are two types of personalities. One personality is very, very introvert, another is very, very extrovert. You might start having issues with this kind of leadership. So first, identify and manage your own emotions, and then comes self-awareness and self-regulation. And further, it's possible to empathize, it's possible to be compassionate, it's possible to take care of the well-being of the student or your colleagues, and that will also help you become a good emotional, a good academic leader with
good emotional leadership skills. Then comes the transactional leadership, leadership style where the leader and the follower exchange. There is a lot of exchange of ideas. So the leader rewards the followers if they follow instructions or do what they want. The follower will also get rewards if they do their job well. So a transactional leader gives instructions and expects results from his followers while simultaneously rewarding them when they get those results. The very idea of awards and incentives for bringing change, for doing effective change management. So, you as a teacher, you set a certain performance goal, assign them the time, and then you can give them rewards for good performance. I'll share some of my own good practices as a teacher. I maintain an attendance register. मुझे पता है आप सब भी attendance register maintain करते होंगे. मैं अपने attendance register को हर महीने कैलकुलेट करती हूँ और उसमें मैंने अपनी क्लास में ये बता रखा है स्टूडेंट्स को कि हर महीने जिसकी मैक्सिमम अटेंडेंस होगी उसको एक छोटा सा सुवेनियर मैं दूंगी. वो मैं अपने पास से देती हूँ. कभी मैंने एक पेन दे दिया किसी को, कभी मैंने एक बुक दे दिया किसी को, कभी मैंने एक नोटबुक दे दिया किसी को. लेकिन वो जो एक तजर्बा होता है ना स्टूडेंट के लिए, और बड़े बड़े मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो जो एक तजर्बा होता है स्टूडेंट्स के लिए कि आज फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ का हमारा फर्स्ट क्लास है और आज क्लास में अवार्ड मिलना है, और हम तो पिछले महीने हमारी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी, तो मैम मेरी कितनी है. मुझे मालूम है किसी की अटेंडेंस कम नहीं है, या जिसके है वो उसका तो एक दूसरा रूल है, वो उसके ऊपर अप्लाई होएगा, उसको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, उसको एग्जाम नहीं दे पाएगा, वो अलग बात है. लेकिन एक ये छोटा सा जो ट्रेडिशन मेरी क्लास में चल रहा है कि मैक्सिमम अटेंडेंस वाले को मैं नाम अनाउंस करूंगी क्लास में, उसको हम बुलाएंगे सामने, उसको हम एक छोटा सा कुछ देंगे, अपनी साइन की हुई बुक या कुछ भी, और उसके लिए सब तालियां बजाएंगे. बहुत बड़ी चीज होती है. हालांकि सब अडल्ट स्टूडेंट्स हैं और हालांकि सब को पता है कि अपने अपने पढ़ाई करनी है और अपने अपने मार्क्स लाने हैं, अटेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो काफी है, लेकिन दैट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रिवॉर्डेड, इट ब्रिंग्स आउट गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम देम. सो दे वर्क फॉर गुड अटेंडेंस. सुबह सवेरे 8 बजे भी अगर मेरी क्लास होती है तो बच्चे आते हैं, उसमें आते हैं, आकर के क्लास करते हैं उसमें, क्योंकि उनको पता है कि उनकी अगर मैक्सिमम हुई, उनकी अगर हाईएस्ट हुई तो उनको अवार्ड मिलेगा क्लास के अंदर. तो ये छोटे छोटे हमारी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की ये जो है हमारी निशानियां हैं. हम वी कैन फॉर्मुलेट आवर ओन ingenious ways of doing little things in class, or little things as if you are working as an HOD, if you are working as a provost or a proctor, and then you have a team of people to work with you. तो in that case जो है ये आप कर सकते हैं. इसको छोटी मोटी आप खुद भी सोच सकते हैं कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं. Well, moving on to the next. I don't have to say anything else now about academic leadership. अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो वो हम अभी ले सकते हैं. Otherwise, we will move on to digital leadership, which is an important pillar of leadership. So, any question? Anybody? All right. Now let's move on to digital leadership. Leading digitally. The slide is visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. Now we are going to talk about leading digitally. Right. Your ability to embrace technology
is your ability to lead digitally. And let me tell you, this is the age of digital leadership, and it is not possible to lead effectively if you are afraid of technology, if you are afraid of e-leadership, and if you are afraid of digital technology leadership. It can help you leverage technology to create innovative learning experiences. It can foster collaborations, and it can drive positive change within the academic community. So every day we have new digital assets, we have new emerging technologies, and it becomes important for leaders to take the plunge into leading digitally. Now, the important pillars of digital leadership are communication, public relation, branding, student engagement, and professional growth and leadership. And finally, re-envisioning the learning space and environment. आप देख रहे हैं हमारा जो क्लासरूम हुआ करता था वो किस तरह से री इमेजिन किया गया है और किस तरह से री एनविजन हुआ है, और हम इस तरह आज ऑनलाइन एक क्लास में आपसे बात कर रहे हैं। आप सब पूरे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों से होंगे जहाँ से हम सब एक साथ हैं, तो विच इज बीइंग पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एंड बिकॉज ऑफ डिजिटल लीडरशिप। हम डिजिटल लीडरशिप का इस्तेमाल ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन में कर सकते हैं। बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, AI असिस्टेड टीचिंग टूल्स हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। अब तो एक चैट जीपीटी का आपने देखा होगा कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बन रहा है। चैट जीपीटी को आप सिर्फ बता दीजिए और वो आपको पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। हाइब्रिड टीचिंग, आपको मालूम है, फ्लिप्ड क्लासरूम, हाइब्रिड टीचिंग, वीडियो बेस्ड कंटेंट, और इसके अलावा ऑनलाइन इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। अब मूक्स के जो कोर्सेज हैं जो स्वयं प्लेटफॉर्म पे हैं, उनसे पूरी डिग्री अवार्ड भी मूक्स स्वयं से हो रही है। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो 5 गाइडिंग पिलर्स हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहुंच यानी कि रीचिंग टू द अनरीच्ड। इक्विटी आपको पता है, बराबरी, सब में समानता, मसावात जिसे कहते हैं। गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता। अफोर्डेबिलिटी बहुत अहम है, हर कोई हर किसी तक शिक्षा पहुंचे, एक्सेसिबिलिटी हो। इसके साथ ही साथ अहम है कि जो हमारा ये डेवलपिंग, इट्स अ डेवलपिंग नेशन आवर कंट्री, और जिस तरह से हमारे देश के जो भी तबके हैं, जो गरीब तबके हैं, उन तक हमारी बात पहुंचे, इसके लिए अफोर्डेबिलिटी। और फाइनली अकाउंटेबिलिटी। तो आप देखिए, ऑनलाइन और डिजिटल जो एजुकेशन है वो कैसे इन 5 पिलर्स को कितनी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बना रही है। एक केस ले लीजिए, एक लड़की का जो कि किसी सुदूर गांव की है और उसने वहां से इंटरमीडिएट कर लिया है। अब आज भी हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां एक भी लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई क्योंकि माँ बाप ने नहीं भेजा। गांव में इंटर कॉलेज है, गांव के इंटर कॉलेज से इंटर कर लिया, अब वो शहर के किसी डिग्री कॉलेज में नहीं आएगी। 18-20 साल में उसकी शादी हो जाएगी। वहीं अगर उसके पास सिर्फ एक डिवाइस हो और इंटरनेट हो, तो वो किसी डिग्री कोर्स में घर बैठे स्वयं पे नेपटेल पे एडमिशन ले सकती है। सबसे पहले हमने कौन सा पिलर अचीव किया? एक्सेस। इसके बाद आता है इक्विटी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर आप हायर एजुकेशन का उठा के देखें, उसमें जो इनइक्विटी है बिटवीन, जो जिसे हम कहते हैं जेंडर इम्बैलेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, वो भी बहुत हद तक इसलिए है कि गांव की लड़कियों को माँ बाप बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं। तो इक्विटी भी आपने इससे अचीव की। क्वालिटी का मामला तो ऑनलाइन में ये है कि कुछ सोचना ही नहीं है। मूक प्लेटफॉर्म पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स हैं जो उनको एडहियर करता है,
उसी के कोर्सेज उस पे डाले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूर कॉलेज है जिसमें कोई टीचर जी है जो है वो अच्छा नहीं भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल साहब उन्हें कुछ कह नहीं रहे हैं और बिना पढ़ाए ही पूरी डिग्री हो जा रही है, ऐसा नहीं है। आपके मुक्स कोर्सेज की जो फीस है वो सिर्फ 1,000 रुपए है क्योंकि इनमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। ये 100% पब्लिक फंडेड है और इनमें 100% स्टैंडर्ड और क्वालिटी का कंट्रोल है। तो ये 4 पिलर्स डिजिटल लीडरशिप की वजह से, डिजिटल एजुकेशन की वजह से अचीव हो गए। अब आइए फाइनली अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, यूजीसी को नहीं पता कि फलाने गांव के कॉलेज में कौन बच्चे की क्या अटेंडेंस थी, उसका क्लास हुआ कि नहीं हुआ, वो जब पेपर हुआ तो उसमें नकल हुई कि नहीं हुई, लेकिन उसको डिग्री मिल गई। नतीजा क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमारे देश के जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी है वो बहुत कम है। वो इतनी कम है कि इन्फोसिस को अपने यहाँ एक पैरेलल कैंपस बनाना पड़ा है और कैंपस रिक्रूटमेंट के बाद जो प्रोफेशनल्स को वो इन्फोसिस में एम्प्लॉय करते हैं वो उनको पहले ले जाके वहाँ पे अपने कैंपस में एक ब्रिज कोर्स या एक कोई प्रिपरेटरी कोर्स करवाते हैं और उसके बाद ही उनको वो अपने यहाँ कंपनी में जॉब देते हैं। तो किसी बच्चे ने कितनी क्लास की, कितनी, अब यही आप देखिए, हम आपसे गूगल मीट पे बात कर रहे हैं, आपके जिस सेंटर में आप एनरोल्ड हैं उस सेंटर के पास पूरा डेटा आ जाएगा कि आप कितनी देर क्लास में आए, कब आपने लॉग इन किया, कब आप लॉग आउट हो गए, सभी कुछ। और फिर इसका जो एग्जाम होता है वो AICTE में जाकर के होता है और सेंटर्स बने हुए हैं AICTE के एग्जाम के। तो ये 5 पिलर्स जो कि एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन्हें हम याद कर लें, ये NEP के 5 पिलर्स हैं और ये 5 पिलर्स बहुत सुदृढ़ होते हैं डिजिटल लीडरशिप से। तो हमारा ये जो लैंडस्केप है, एजुकेशनल लैंडस्केप, ये हर घड़ी हर क्षण बदल रहा है, इसमें एक एवोल्यूशन हो रहा है और ये पूरा एवोल्यूशन जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कि जो भी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स पहले से एग्जिस्ट करते थे अब उनको भी री इमेजिन करने की जरूरत है डिजिटल लेंस से। और इस तरह से आपका लर्निंग, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, आउटरीच, सभी कुछ बहुत ही ज्यादा और बेहतर हो सकता है। तो आप में से कोई अगर इस तरह की पोजीशंस लेते हैं जैसे कि एकेडमिक लीडरशिप की पोजीशंस हैं, तो सबसे पहले एक क्लियर डिजिटल विजन आपके पास होना चाहिए जो कि आपके इंस्टीट्यूशनल गोल से अलाइंड हो। इसके साथ ही साथ एक कॉन्क्रीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रैटेजी बनाइए। एक दिन में नहीं होता, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने यहाँ पे एक स्टूडियो बना लूँ। लगता है कि इस साल बन जाएगा, लेकिन मैंने उस पे मैंने हार नहीं मानी है, मैं उसको हर बार परसू करती ही रहती हूँ। और अगर 3 साल में बन गया तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसे कि मैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानूंगी। तो हर किसी के सामने जो है ये चैलेंजेस आते हैं, इसको परसू करने की ज़रूरत होती है। एक्शनेबल स्टेप्स होने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स जो हैं उनको हमें प्रायोरिटाइज करना होगा, क्योंकि जब तक हम डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग नहीं करते और पॉलिसी एडजस्टमेंट्स नहीं करते और हमारे पास रिक्विजिट जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आई एम थैंकफुल, आई मस्ट से कि हमें टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की डिजिटल इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस के लिए बहुत एनकरेज किया जाता है और बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट हमें मिलता है, तो हम इसे जो है हम कर सकते हैं। इस तरह से आप लर्निंग कम्युनिटीज, डिजिटल कोलैबोरेशन एंड एंगेजमेंट से लर्निंग कम्युनिटीज तैयार कर सकते हैं। आपको पता है एक बहुत अच्छी सेइंग है, युवाल नोवा हरारी एक राइटर हैं,
वो सेपियंस नाम की एक नॉवल है उन्होंने लिखी है, वो बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, ह्यूमन हिस्ट्री पे उनका काम है, दरअसल वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं हैब्रो यूनिवर्सिटी में, और वो बड़ी बारीक बीनी से और बड़ा इंसाइटफुल होते हैं उनके ऑब्जर्वेशंस. सो ही सेड वंस दैट वो एक अलग टाइम था जब पूरे संसार में जो सभ्यताएं होती थी वो नदियों के किनारे होती थी और नदी घाटियों में हुआ करती थी. सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं ना, तहजीब और तमद्दुन, इट वाज ओनली हैपनिंग अलोंगसाइड अ रिवर. आप पुराने किसी भी शहर का नाम ले लीजिए और पूरे दुनिया में किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, किसी ना किसी पानी के सोर्स के पास है. न्यूयॉर्क जो है वो मैनहट्टन बे के पास है, लंदन आप सबको पता है टेम्स के पास है, हमारे देश में भी जितने बड़े शहर हैं, गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के पास हैं. ऐसा नहीं होता था पहले कि कहीं कोई ऐसा सिविलाइजेशन हो जाए जो कि नदी के पास नहीं है. तमद्दुन की बुनियाद जो है वो पानी हुआ करती थी. बट यू नो व्हाट हरारी सेज नाउ? हरारी सेज द न्यू एज रिवर इज एल्गोरिथम. उसका कहना है कि जो महत्व पहले किसी सभ्यता के लिए पानी का हुआ करता था, वही महत्व आज के समय में, जो कि आईटी रेवोल्यूशन के बाद का समय है, ये जो दौर चल रहा है आज दुनिया में, जो जमाना नया आया हुआ है जिसमें एक आईटी रेवोल्यूशन के बाद हम सांस ले रहे हैं, तो इस दौर की जो नई नदियां हैं, द न्यू रिवर्स alongside which civilization will be and civilization will take place, these rivers are algorithm. So we have to foster a data driven culture using analytics to inform decision making, and utilize digital tools to create virtual communities and cross-disciplinary research teams. फिर मैं बहुत ज़्यादा quotations के साथ अपनी बात को कहना पसंद करती हूँ, तो मैं एक दूसरा quotation इस समय आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक टेडी टॉक थी, आप सब जानते होंगे, टेड टॉक जिसे कहते हैं, और उसमें ये कहा गया था कि देयर इज नो प्रॉब्लम which can be solved without a multidisciplinary approach. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी आपके भी खुद इस कोर्स में भी लेक्चर्स हुए होंगे, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन पे तो बहुत जोर है. द पॉलिसी ऑल्सो एम्फसाइजेस क्वाइट अ लॉट ऑन cross-disciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary. The digital tools are very effective, I must say, not just time and space effective, but also very cost effective in creating and conducting these cross-disciplinary research teams, and problems can be solved because of this kind of a multidisciplinary approach. And with the help of technology, with the help of digital collaborations and engagements, we can also promote international partnerships and exchange programs through digital platforms, which will again go into leading our universities and our higher education institutions towards becoming world-class institutions. So here in our country, these are some government-led digital learning platforms. You are all encouraged to make good use of them. Encourage your students to make good use of them. There is Diksha, there is Swayam, there is Swayam Prabha, E-Pathshala, Nishtha, PM E-Vidya, and all this being done by Swayam is being done by NEPTEL course on the Swayam platform, and encourage more and more of your students to do these courses from the Swayam. And every institution, whether it's a school, whether it's a college or a university, it is unimaginable without a library. So we are in an age where libraries are being digitized, and this is much to the benefit of research and much to the benefit of academic progress, because libraries have such precious resources.
without which any research cannot benefit. However, because of the physical barriers, because of time-space barriers, because of geographical distances, it was very difficult for researchers, writers, academicians, knowledge seekers to make full use of libraries. One had to take a travel grant, one had to take a travel leave, go and visit a particular library, take notes, spend time there, and only then it could happen, because many libraries have such precious manuscripts that cannot be issued, that cannot be taken outside the library. They are so old, their papers have become so brittle, you can't even touch the pages, you can't even turn the pages. But everything has now been solved by having transcripts of the old manuscripts, which can easily be seen by anyone, anywhere in the world. Scanned copies of books. There are ebooks. There are, you must be knowing a lot about so many platforms all around the world, where there are ebooks, where there are scanned books, and libraries are being digitized, and it is helping a lot in expansion and updating and uplift of higher education goals. So we must try to bridge the digital divide by ensuring equitable access for all, emphasize inclusivity and accessibility in all digital spaces and sources, offer alternative modes of access and cater to diverse learning styles, and address potential biases in algorithms and promote responsible data practices. That's how education will be future-proofed. The way AI has come, the way MOOCs and Moodles, and the way online courses from the best of the best universities are being offered, the way we are in an era of globalization and internationalization of knowledge. Very soon our careers might be jeopardized if we do not go digital, if we do not invest in robust IT infrastructure and have a reliable internet, if we do not stay informed about cutting edge technologies and their educational potential, and if we do not foster a culture of experimentation and pilot projects for testing new technologies. So the digital leader has good digital literacy skills, can embrace adaptability, and can champion ethical practices. So we can build a strong foundation by allocating resources and partnerships, have the right kind of IT personnel, train them, provide them infrastructure, upgrade their infrastructure, identify digital champions within your institutions, and then, if possible, to the best extent, get more partnerships and more funding opportunities. So these are the success markers of digital leadership. High number of trained students and faculty, development of a digital culture within the university, degree and digital tools being used, enrichment of the overall quality in research and knowledge, the cultivation of the creativity in the course offerings, and the creation of a strong task force that could sustain the initiative. So the National Education Policy also focuses a lot on digitalization of education. It is making a national repository called Diksha for the digital infrastructure for knowledge sharing, and encourages teachers and students to access digital material for guidance. And it puts the teacher at the forefront of the digital future of the children, and given the explosive pace of technological development, wherein a lot of creativity is needed. So things like machine learning, blockchain, smart boards, handheld computing devices, adaptive computer testing for student development, and other forms of educational software and hardware are envisioned not just to change the classroom, but how they learn
and but we need to do a lot of extensive research and on technology and the educational front. So an autonomous body named NETF will be created. This is what the National Education Policy says, to provide a platform like this. And the National Education Policy envisions for addressing the digital divide and teachers and students in their medium of instruction as far as possible. It has a great thrust on world-class digital infrastructure, educational digital content and capacity, and it encourages for not just online teaching, but for all kind of planning, management, processing admissions, attendance, taking fees, assessments, everything happening digitally. So these are the takeaways, that it's not a journey, it's not a destination, it's a journey. Tomorrow there will be a new change, and you need to embrace these changes continuously. You can work together, transform education and research with the help of technology, and work continuously. So the fact that you have come to this course means that you have a certain amount of dedication towards continuous professional development, and that's why you are here. And this is exactly what digital leadership requires, and digital leadership means that today something new and innovative has come, but tomorrow another thing will come, and you need to continuously upgrade yourself. You need to continuously embrace technology. So thank you. I will see you after a short break, and then we will be looking at the university system, various other financial management and others, and that will be the second part of the session. अभी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तो फिर हम आपसे चाय के ब्रेक के 15 मिनट बाद मिलते हैं. ओके, श्योर मैम.